अभी भी हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हम अपने आसपास की चीजों को मुंह में चख कर ही ये पता लगाएं दैट इज एसिड और बेस। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक एवरीथिंग थ्रू आवर टंग that is acid or base, because it might be possibilities that some substances are very harmful or poisonous for our body. So how we identified that a particular thing is a acid or base? यहाँ पर अब हमारा मेन हीरो एंट्री करता है, that is indicator। सिंपल वे में अगर हम उसको डिफाइन करें तो the substance which used to identify whether a solution is acidic or basic, that is called indicator. Indicator means simply it indicates that a solution is a acid or base. ये उस सॉल्यूशन को कलर देता है, उस कलर के माध्यम से ही हमें ये पता चलता है कि वो एसिड है या बेस। There are two type of indicator, natural indicator and a synthetic indicator. Natural indicator, their sources are nature. We obtained from animal or plants like China rose, turmeric, lichen and red cabbage. Second, synthetic indicator, their sources that we obtained from labs like methyl orange and phenolphthalein. Let's go our first indicator, that is litmus paper. It is most commonly used indicator which is obtained from the extracted of lichen. Lichen is a sea product which is the situation of symbiotic relationship between the algae and the fungi. जो हमें लैब में मिलता है that is the strip of litmus solution. लिटमस सॉल्यूशन में फिल्टर पेपर उसको डुबा करके जो पेपर के फॉर्म में हमें प्राप्त होता है दैट इज लिटमस पेपर। यह दो प्रकार का होता है, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। यह किस तरह से काम करता है आइए जानते हैं। We will first look at how the indicator is made, means the whole process of preparing of an indicator. Then how an acid and base is measured or detected by this indicator. First we will see about the natural indicator like China rose indicator, turmeric indicator and litmus paper indicator. Then try to understand how these indicators identifying an acidic and basic solution through their changing color. So let's see. When we study about the chapter of acid, base and salt, it is necessary to show the acid base test among the children and I demonstrate just this activity among you. मेरे हाथ में ये 6 चाइना रोज इंडिकेटर पेपर के फॉर्म में है जिसे मैंने अभी इससे पहले जो चाइना रोज के पेटल्स हैं उसे बनाया था और ये 6 सॉल्यूशंस है। सबसे पहले टेस्ट करते हैं। फर्स्ट here this plate having vinegar solution and it gives pink color, it means that it is a acidic solution. This is dark green color, it means that it is a basic solution. And here lemon juice, it also gives pink color, it means that It is a acid. And here caustic soda, it also give green color. And here soap solution, it also give green color. And last salt solution, it doesn't change its color, it means that it is a neutral solution. इस तरह से चाइना रोज फिल्टर के द्वारा हम जो भी सब्सटेंस है उसको बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस। एसिड इसको पिंक कलर देता है एंड
जो बेस है वो इस तरह से डार्क ग्रीन कलर देता है। Again we repeat this activity with the help of this टर्मरिक पेपर। हमने जिसे इस टर्मरिक सॉल्यूशन से बनाया था इस पेपर को। देखते हैं फिर से इन सभी जो 6 सॉल्यूशन हमारे बीच में है वो क्या कलर देते हैं। इट इज नॉट चेंज इट्स कलर, दैट इज विनेगर सॉल्यूशन। ओके, it change its color to dark red color. In lemon juice again it not change its color, it means it is an acidic solution. And a caustic soda solution, it also gives red color. And the soap solution, it also give red color. And last salt solution, it doesn't change its color, so we know that it is a neutral solution. So in this activity we see that the acidic solutions don't change the turmeric paper's color, and the basic solution change its color to dark red color. Same activity we just repeat with the help of this litmus paper, that is blue litmus paper and red litmus paper, जो सभी साइंस लैब में पाए जाते हैं। ये चूंकि लाइकेन से बनाए जाते हैं, यही एक्टिविटी हम उसमें भी देखते हैं। कोई कलर चेंज नहीं, दैट इज विनेगर सॉल्यूशन, एंड इट चेंज इट्स कलर टू रेड टू ब्लू कलर। कोई कलर चेंज नहीं, that is change its color to red litmus paper to blue. And last it also change its color, soap solution, and it is salt solution, it doesn't change its color. तो यहाँ भी हमने देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसने बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और सोप सॉल्यूशन इन तीनों के कलर को चेंज किया फ्रॉम रेड टू ब्लू। इट मींस दैट बेस चेंज द रेड लिटमस कलर इनटू ब्लू। You can do this activity very effectively in your classroom or labs. First of all, making different groups having 5 students, then give them to acidic, basic and salt solution. After
leave them to do this activity, and you just watch and monitoring their activity. Now repeat the same activity in this blue litmus paper. तो इसने ब्लू को रेड कर दिया. इट मीन्स दैट विनेगर इज ए एसिडिक सॉल्यूशन. अब ये ब्लू भी है. ओहो. एंड इट अगेन चेंज इट्स कलर रेड. ये ब्लू ही है. ये भी ब्लू ही है. और ये कोई कलर चेंज नहीं किया. इट मीन्स दैट द ब्लू लिटमस पेपर just acidic solution change its color from blue to red, and the basic solution doesn't change its color. It remains its own color like blue. We just repeat in this activity with the help of this red litmus paper, which easily obtained from this junior science lab. First we check in the vinegar solution, and it doesn't change its color. It remains its red color, and it is easily change its color from red to blue. That is baking soda solution. And in the lemon juice also it doesn't change its color. In the soap solution, caustic soda solution, that change its color red to blue. And last soap solution also it change its color from red to blue. And salt में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसने एसिडिक सॉल्यूशन में किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं करता है, जबकि जो बेसिक सॉल्यूशन है उसको रेड से ब्लू में चेंज करता है, लाइक दैट. ओके. So now we conclude that the indicators only identify the given substance, that is acid, base or neutral, like turmeric indicator, like China rose indicator, and sometimes that is blue and red litmus paper. All these litmus paper only identify the given substance, that is acid or base. We also use this synthetic indicator, that is phenolphthalein and methyl orange. It also identify the substance, that is acid or base. So indicator are those substance which give a specific color to the given solution, that we identify that the particular solution is acid or base. Whenever you doing any science experiment or activities in school or labs, it is necessary to follow the rules of labs or experiment. Acid or base can burn your skin or clothes, so be careful, especially handling with acids, and do all the activities under the supervision of your teachers, your guardians. So always follow the rules of labs. इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट ना करें. साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट इज नथिंग. सो डू ऑलवेज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, नॉट ओनली योर स्टडी बट आल्सो योर डिफरेंट एक्टिविटीज. सो बी हेल्दी, बी कूल. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ विथ ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट.